Good morning students. In last lecture we will discuss about arenes. So now we move on next topic, which is our aromaticity. Aromaticity. It is a property of sp2 hybridized planar rings in which the p orbital allow cyclic delocalization of pi electron. इसके अंदर क्या होता है, जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का. नेक्स्ट वी मूव ऑन कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी. एन एरोमेटिक कंपाउंड इज अ साइक्लिक एंड प्लेनर. आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है शुड बी साइक्लिक और प्लेनर. We will discuss already your benzene is also a planar molecule via X-ray diffraction data reveals. X-ray जो डिफ्रैक्शन डाटा रिवेल था उसने क्या बताया था कि जो बेंजीन आपका वो क्या है, एक प्लेनर मोलिक्यूल है. एंड नेक्स्ट इज ईच एटम इन एरोमेटिक ring has p orbital. These p orbital must be parallel so that continuous overlap is possible around the ring. जो continuous overlapping होगी, जैसे हमने बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर देखी है उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग्स होती है. एंड देन साइक्लिक पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वेयर n इज एन इंटीजर एंड दिस इज नोन एज हक्कल रूल. ये क्या होगा, आपका हक्कल रूल होगा. इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्टली एरोमेटिसिटी के लिए आपका मोलिकुलर क्या होना चाहिए, शुड बी प्लेनर एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग. एंड नेक्स्ट वन इज योर शुड सेटिस्फाई हक्कल रूल. हक्कल रूल को क्या करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए. ये कंडीशन होगी किसकी, एरोमेटिसिटी की. नेक्स्ट हियर आई विल गिव यू सम एग्जांपल. फर्स्ट इज योर बेंजीन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. वेयर n क्या था आपका, नंबर ऑफ रिंग्स. इट शुड बी वेयर n इज एन इंटीजर 0 1 2 3. these represent the number of rings. Some example of aromatic compound. ये aromatic word आएगा जी, that is your aromatic compound are given below. First is your benzene. ring कितनी है आपके पास रजे, 1+2 that is your 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं अब आपके पास. 1 सिंगल बॉन्ड that means 2 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 3 into 2 that means you have 6 pi electrons. So benzene is your aromatic compound. Benzene क्या होगा आपका, aromatic compound होगा. And then next we move on this. You have ring 1 into +2 that is your 6 pi. In this you have cyclopentadienyl ion. In this you have only 2 and 2 into 2 that is 4 electrons. Here cycloheptatrienyl cation. In this you have ring 1 and 3 double bonds that means you have 6 pi electrons. Next we move on naphthalene. In that case 2 rings 4 into 2 plus 2 that means you have 10 electrons, 10 pi electrons. 1 2 3 4 and 5. 5 single bond that means 5 into 2 you have 10 pi electrons. So your naphthalene is also a aromatic compound. Next we move on anthracene. In anthracene you have 3 ring 4 into 3 plus 2 12 plus 2 that means you have 14 pi electrons. In that case 1 2 3 4 5 6 7 7 single bond that means 7 into 2 you have 14 pi electrons. You have 14 pi electrons. That means your anthracene is also a aromatic compound. Next here we move on this. You have 3 rings that means you have total 14 pi electron. In that case 1 2 3 4 5 6 7. This also contain 7 into 2 that means 14 electrons, 14 pi electrons. So these are aromatic compounds.
And next we move on preparations of benzene. This is a much important. Benzene is a commercial isolated from coal tar. However, there are some synthetic methods which is applied in laboratory for the preparations of benzene. Firstly, what is coal tar? आपको पता होना चाहिए coal tar क्या है. A thick black liquid produced by distillating bituminous coal. That is your coal tar. Here in this we can use benzene, aniline and naphthalene also. From coal tar, it is a commercial method. For commercial purpose we can use benzene is a commercial isolated from coal tar. आप benzene को कैसे form करोगे? coal tar की help से at a commercial level. But there are some another methods which with the help of this we can prepare benzene in the laboratories also. These methods are the firstly by cyclic polymerization of ethylene. Here I can write some methods which we can use in labs. Laboratory methods. First is your cyclic polymerization. ये वर्ड आपने ऑलरेडी सुना भी और ये रिएक्शन भी देखिए जो भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगी. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन. And then second method is decarboxylation of aromatic acid. Decarboxylation of aromatic acids. And then third is reduction of phenol. So let's see these three methods. With the help of this we can prepare benzene in labs. First, cyclic polymerization of ethene. आपने इथीन लिया, 3 इथीन्स को आपने cyclic polymerization किया. ऐसी रिएक्शन आई थिंक आपको सभी को ध्यान है. ये रिएक्शन अपनी यूज की थी. We can use this methods. In this method we can prepare benzene in the presence of red hot iron tube at 873 Kelvin temperature. Red hot iron tube. With the help of this we can prepare benzene. By passing acetylene through red hot iron tube at temperature 873 we can prepare benzene. Next one is your decarboxylation of aromatic acids. Decarboxylation by heating sodium salts of benzoic acid with soda lime. सोडा लाइम आपका NaOH NCaO. आपको ध्यान होगा जिस टाइम आप इसकी प्रेजेंस में किसको हीट करोगे, बेंजोइक एसिड को हीट करोगे तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी. सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड को हीट करोगे आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में, दैट इज योर सोडा लाइम को हीट किया आपने, देन यू विल फाइंड दैट इज योर बेंजीन एंड प्लस Ne2CO3 रिएक्शन में आपको एज वाया प्रोडक्ट मिलेगा. एंड नेक्स्ट बाय हीटिंग फिनोल विद जिंक डस्ट. आपने फिनोल को जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करना है. जिंक डस्ट इन फिनोल वेपर or pass over heated zinc dust, then you should get benzene and ZnO. Zinc oxide आपको मिलेगा. You can use here 3 methods. Firstly, 4 methods. Preparation of benzene. Firstly, in commercial, we can isolate benzene from coal tar. Coal tar is a thick black liquid produced by distillation of bituminous coal. Distillation of, here I can write distillation of bituminous coal. Next, in labs we can use benzene via 3 methods.
फर्स्ट इज योर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किसका? इथेन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करोगे. एंड नेक्स्ट वन इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड लास्ट वन is reduction of phenol. By passing acetylene through red hot tube, you can prepare benzene by heating sodium salt of benzoic acid with soda lime, and you can heat all these, then you get benzene and Na2CO3. And last one is by heating phenol with zinc dust. zinc dust की presence में आपको phenol को heat करना है, then you will get benzene and zinc oxide. Next we will discuss about physical properties of benzene. Physical properties of benzene. Benzene आपका जो है वो colorless liquid है. We will already discuss this. Benzene is your colorless liquid. It is insoluble in water and soluble in alcohol, ether and chloroform. चूंकि ये कैसा है? non polar solvent, so dissolve in alcohol, ether and chloroform. Benzene itself is a good solvent for many organic and inorganic substances like fat, resins, sulfur and iodine. It burns with a luminous sooty flame in contrast to alkanes and alkenes which usually burn with a bluish flame. बर्न होते एक सूटी फ्लेम के साथ विद येलो कलर. इन कंप्लीट कंबशन लैक ऑफ ऑक्सीजन मेक वेसल्स ब्लैक. वेसल्स जो ब्लैक हो जाती है उसको एज इन विलेजेस काजल के यूज पर्पज में यूज किया जाता है. जो आपके नैफ्थलीन बॉल्स वगैरह हैं उनको यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ्स एंड यूज्ड इन वॉश बेसिन्स ऑल्सो बिकॉज दीज नैफ्थलीन बॉल्स हैव ए यूनिक सूटी स्मेल्स. यूनिक स्मेल्स लाइक मोथ रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती है. योर नैफ्थलीन बॉल्स का एग्जाम्पल यहाँ आई विल राइट हियर इट नाउ. Naphthalene balls, preservations of cloths and used in wash basin. Got it? Because they have a unique smell. And smell like moth repellent प्रॉपर्टीज. कपड़ों को खराब होने से जो है बचाती है. नैफ्थलीन बॉल्स आपकी यूज की जाती है. सो नैफ्थलीन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स. दैट्स वाई वी यूज नैफ्थलीन बॉल्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स. So today we are discuss about physical properties of benzene also. In next lecture we will discuss about chemical properties of arenes. Benzene undergo following type of chemical reaction. First is your electrophilic substitution reaction and next one is your addition reaction. In electrophilic substitution reaction क्या होता है? Let's see here. Electrophilic substitution reaction में क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा और ये किसको रिमूव कर देगा? आपके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा. एंड देन क्या होगा? खुद रिंग के साथ आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिमूव अप हो जाएगा. ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल. एंड नेक्स्ट वन इज योर एडिशन रिएक्शन. इन दिस we use many electrophilic substitution reaction like halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. बहुत सारी रिएक्शन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. So today we will discuss about 3 concepts. First is aromaticity. How you can define aromaticity? Why 3 methods, 3 conditions. First is planarity and second one is delocalization of pi electron in the ring and third should satisfy Huckel rule. Your Huckel rule is 4n plus 2 pi electron where n is represent your number of rings. We take many examples like benzene, naphthalene, anthracene. Next we will discuss about preparations of benzene. Why for commercial purpose we can use we can isolate it from that coal tar
And in laboratory, we can use three methods: cyclic polymerization of ethane, decarboxylation of aromatic acids, and third one is reduction of phenol. Next, we will discuss about physical properties of benzene. It is a colorless substance, non-polar molecules with the characteristics aroma, solubility like dissolvent like. These are non-polar solvents. So water is a polar solvent. They are immiscible with water but miscible with many organic solvents. And naphthalene balls are used for preservation of cloth and used in wash basins also, and have a unique smell and moth repellent properties. These are burned with a sooty flame or yellow color in complete combustion in black of oxygen and make vessels black. And next we will discuss about some chemical properties like इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन की जगह खुद आके बैठ जाएगा. दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मैनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, sulfonation and many more others. So till then, thank you and have a nice day, students.